Hi everyone. Hi Apoorva. First of all, I would request everyone here if they can open their cameras, that would be great. Else they can sit enjoy like this also. No worries. Also, whatever questions you may have, you can just type in the chat box. Okay. So have you listened such statements like she's too ambitious? Hmm. She doesn't take care of her family well. Career is other important. Oh, how do I manage between my work and my family? Will getting married affect my career growth? Will I stay relevant after coming from long maternity leave? Sounds familiar, right? Yeah. So I don't know what to do and how to do. Right. And these kind of statements or these kind of expressions हमें बहुत आमतौर पर सुनने मिलते हैं when the women are working also and also taking care of a family. Right, Shefali? Right. Absolutely right. And so today we are going to talk about the challenges which usually a working woman face. So, hello everyone. I'm Shefali Agarwal, Hi everyone, I'm Apoorva Misra. and as I said earlier that आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक वर्किंग वुमन की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो जब ये जर्नी स्टार्ट होती है एक लड़की के जीवन में, जब वो शुरू करती है अपने पढ़ाई को, एजुकेशन को आगे बढ़ाती है, उसको बाहर जाना होता है, तो आई थिंक वहां से हमारा कुछ स्ट्रगल्स एक लड़की के लिए शुरू होते हैं। तो अपूर्वा, व्हाट यू से अबाउट दिस? Yeah, I completely agree. I think when a girl starts working or maybe जब उसको बाहर जाना होता है कोई डिग्री लेने के लिए किसी और शहर में जाना होता है when she has to become independent, there are so many things that are crossing your mind. आप एक ऐसे environment से निकल के जहाँ पे आपको बहुत पैम्पर किया जा रहा होता है घर के अंदर, आप ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे शायद आप किसी को जानते नहीं हो, सो ऑब्वियसली आपको होम सिकनेस हो सकती है, राइट? देन आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ विच इज वेरी न्यू, सो यू माइट बी वेरी फियरफुल, राइट? एंड जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे नेबर्स और पीपल इन जनरल, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि ओ शी इज अ गर्ल, तो लड़की है उसको बाहर कैसे भेजे। एंड देन आप बहुत सारे करियर चॉइसेस भी कई बार ऐसे ले लेते हो जो आपको लगता है कि बीइंग अ गर्ल यू शुड मेक। सो यहाँ पे एक जेनरिक सेंस क्या होता है कि ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। ऐसा तो वेरी होता ट्रू। है, राइट? एंड as soon as you come into the company and you start earning, एक वो रैट रेस शुरू हो जाती है। वो सिक्स फिगर चाहिए, जल्दी से अपने एम्बिशंस पाने हैं, अपने गोल अचीव करने, वो भी एक पॉसिबल। स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम पे, राइट? और उस बीच में क्या होता है कि पेरेंट्स एक पुश करना शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 24 to 25, लाइक नाउ दिस इज द एज टू गेट मैरिड। एंड सबका ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव होता है लड़कियों का भी आजकल की दिस इज करियर टाइम, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड दे आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड वेदर दे शुड गो फॉर द मैरिज नाउ और नॉट। और अगर वो अपने पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से आजकल जैसे लेट मैरिजेस होते हैं, लाइक लोग सेटल्ड होते होते 39-40 के एज में शादी कर रहे होते हैं, तो वंस दे गेट मैरिड तो उनको लगता है कि अब ये एक अंदर एक भाव आता है कि हम लोग लेट शादी कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे गो फॉर द कंसीविंग अ चाइल्ड, और वो इतना जल्दी में होते हैं और दिमाग में वो टैबू भी होता है कि लाइक एज इतना हो गया है, फिजिकल फैक्टर्स मैटर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, और अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं इन केस, जो जिस हिसाब से वो प्लान कर रहे होते हैं, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो इजंट अपूर्वा कि कितना ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है वो टाइम पे। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरीके के जो स्ट्रगल से वो लोग गुजर रहे होते हैं उसमें बैचलर रेमेडी कैसे हमारी हेल्प कर सकती है?
Yeah, because see, batch flower remedy is so simple and straightforward, right? हमें इससे पहले पता भी नहीं होता, जैसे मैंने बोला बाहर आए होम सिकनेस लगी, हम क्या मानते हैं कि ये तो होना ही है, बट very हमें पता ही नहीं है कि हम होम सिकनेस को ट्रीट भी कर सकते हैं या हम उस चेंज को इजी बना सकते हैं. सिमिलरली जो आपने केस बताया शिफाली, वेदर और नॉट यू शुड मैरी, यू नो, ये yeah. कंफ्यूजन जो है, इस स्टेट से बाहर निकालने के लिए आप बैच यूज कर सकते हो, राइट? सिमिलरली आप जब किसी को पसंद भी कर लेते हो, आपको उससे शादी करने की नहीं, उससे भी. ये आजकल का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है because people are in the relationship and then too they are not able to decide whether he or she is the right one or not. They are Right. then And also they are confused. the case that you said, many times people go in guilt also. Right. Because of, you know, taking a certain decision, there are certain repercussions with every decision. So obviously, batch is so straightforward. जो भी emotion आपके अंदर घट रहा है, right? आपको डर लग रहा है, आपको confusion हो रहा है, या आपको, let's say you are not able to decide. So उस सब में batch can help so vividly. So yes, of course, batch is helpful there. Similarly, Yeah. I think today many girls are not able to even, not just girls I would say, but mostly we have seen कि एक opportunity है, but उसको लेने के लिए भी you require a certain amount of confidence, right? Confidence. मैं लड़की हूँ, मैं field पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, right? Very big thing. Yeah, मेरी team में, you know, there are so many guys. Will I be able to stay relevant after I come back, you know, from a shadi leave or a maternity leave? So, Right. so all those things are there. Yes, it happens when a girls come back after, जब वो आती है वापस से एक maternity leave पे, personally मैंने भी feel किया है इस चीज को. वो सोचते हैं कि पता नहीं इतने समय में मैं कहीं पीछे छूट गई, क्या मैं वापस से अपने काम को ठीक तरीके से कर पाऊंगी, मेरे साथ वाले जितने हैं वो तो इतना आगे चले गए, मैं यहीं पे रह गई, या जो अब नए लोग आ गए हैं वो मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, या मैं उनके संग में जेल अप हो पा रही हूँ कि नहीं. तो होता क्या है कि वो एकदम लो फील करने लग जाती हैं लेडीज की, मतलब उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है, लोनेस वाली फीलिंग आ जाती है. एंड ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग तो हर लेडी को एक मैटरनिटी के बाद में शायद फील होता ही होता है. I think that carries forward as soon as we turn adolescent. True. At some point or the other. And similarly, I remember an example, you know, where there was a lady who actually did not want to play a sport. उसने sport में participate नहीं किया because she thought, you know, she won't be able to compete with the guys. It's not about competing or not. It's just about आप में उतना confidence आ पा रहा है क्या? आ पा रहा है क्या? Right. हाँ, तो एटलीस्ट आपको चांस देना चाहिए खुद को. आप चाहे आप चाहे कि हारे जीते डजंट मैटर. What matter is whether you are giving try to yourself or not. एंड एट टाइम्स पहले ही शैटर्ड हो जाते हैं बिकॉज एक वो शुरू से एक तरीके का सिस्टम चला रहा है कि नहीं नहीं, men have more physical power and उनके सामने मैच करना मुश्किल होगा. वो सुन सुन करके उनको लगता है कि वो सेल्फ एस्टीम पे भी आ जाता है अगर मैं हार गई तो. that sort Haven't of we issues. like these cases of postpartum depression? Yes. मेरे पास अपूर्वा एक केस था एंड द लेडी गॉट, सबसे पहले तो दैट लेडी गॉट वेडिड एट द एज ऑफ 39. डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस एक दिमाग में एक था कि हमने लेट शादी की है, बट दे वर अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ करियर ओरिएंटेशन, दे वर शी वाज सैटिस्फाइड. यस, नाउ दिस इज the peak time for me that I have achieved my goals. Now I am ready to get married, right? So she got wedded and उसके बाद उन्होंने प्लानिंग जल्दी ही शुरू किया बिकॉज उनको लग रहा था कि लेट होने की वजह से. बट जस्ट आफ्टर 6 months और 8 months, जब उनको कंसीव नहीं हुआ अकॉर्डिंग, मतलब जो वो प्लानिंग के हिसाब से, वो वहीं पे ही शैटर्ड होने शुरू हो गए. बस उनको लगने लग गया कि ये हमारी मिस्टेक हो गई, अभी मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को अलर्ट किया था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, बट नहीं कर पाए. So there were so lot of confusions, guilt factor, and कॉन्फिडेंस चला गया, लोगों के सामने सोसाइटी में जाने में डर रहे हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं.
gloominess aa gayi zindagi mein. So this all we settle down with the Bach Flower Therapy, because I treat them with the larch, I treat them with the hornbeam. Such straightforward medicines, right? In Very back. straightforward medicines की confidence low हो रहा है, ठीक है, लाच ले लो and you will be okay. Yeah. And अगर आपको overburden लग रहा है, elm ले लो, you will be fine. I remember a case of one of my known folks, and she actually delivered a child, and I was just walking, with her, and suddenly, she was just discussing her child is not that healthy yet. Okay, and she started crying, and she was like, she couldn't understand that it was just postpartum symptom. Postpartum depression, yeah. Right. And when I saw her, that it is unsettling for her, we just gave her straight away mustard, and she just bloomed out of it. Apoorva, this remedy I used on myself. Believe me, इतनी जल्दी से एकदम जिंग आता है आपके अंदर ना, something changed and you feel like लाओ अब काम दो, I will do, मैं सब कुछ कर दूंगी. तो मुझे एक लोनेस वाली फीलिंग होती है, इतनी जल्दी से चली जाती है. एंड ये इतने सारे ऐसे सिमिलर केसेस हैं जो कई बार लोगों को मुझे ऐसा लगता है कंसीविंग प्रॉब्लम एट टाइम्स फिजिकल नहीं होती है. ये मैंने अपने अपने अनुभव से देखा अपने केसेस में. ये कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेंटली उसको बढ़ा देते हैं. उस वजह से आजकल देखिए डॉक्टर्स के पास भी जाइए, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, मैम स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिलैक्स रहिए, ऐसे ही बातें डॉक्टर्स कहते हैं. सो कहीं ना कहीं इसका पीछे जो कारण छुपा हुआ होता है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है या कंफ्यूजन्स है. That can easily be resolved with the Bach Flower Therapy, and I really resolved a lot of cases with this, with the wonderful results. So Similarly, like, do you think these can help in day-to-day issues also? मतलब ये तो हमने discuss किया, which were like specific cases, but yeah, day-to-day level पे जो ladies या women, yeah. working women में especially we see Hmm. issues, and do you think how help in there? मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे अपना एग्जाम्पल लेना चाहिए. Because ये just कुछ दिनों पहले की बात है. I was really overburdened and overwhelmed with the work, the responsibilities at home. My kids' exams are going on, and I had a pressure on me कि मैं कैसे ये सारा कुछ बहुत अच्छे से कर पाऊँ. और उसकी वजह से क्या होता है, जब आप इतना प्रेशर लेके कोई चीज कर रहे होते हैं ना, तो प्रोडक्टिविटी उतनी हो नहीं पाती है. और है ना, सो आई वाज रियली फीलिंग सो लो एंड आई वाज इन गिल्ट आल्सो, बिकॉज मैं अगर एक चीज पकड़ रही थी तो मेरे को लगा था मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, मैं फैमिली देख रही थी तो मेरे को लगा था मेरा काम पीछे सफर कर रहा है. सो दैट वाज टू मच फॉर मी. एंड Apoorva, in this case, my favorite remedy is L. As soon as I took L, and now you can see everything is going on smoothly. I don't know how I am able to manage everything so nicely without any guilt, without any losing my confidence, and without any confusion, like what to do, when to do, how to do. So this is something wonderful. So funny. I just remembered a case. We were in middle of a training, and one of my friends, like she actually, she knew that I knew Bach Flower, and she was just too scared. We had a presentation that was to be given on the stage. So उसने मुझे बोला कि I'm really scared, Apoorva. I don't know what will I do there. And I was like, I had Mimulus with me, so I just gave her, just try it. And so when the examiner came, she said, who wants to volunteer? And guess who was the first volunteer? The same girl. So That's so fun. enriching, to see these really natural and really, pure form of what flower essences working so profound. And So इससे सबसे सुंदर बात है इसकी कि 100% नेचुरल है. yes, आप छोटे से बच्चे को दे दीजिए, किसी डेथ बेड पे exactly. लेटे हुए इंसान Pregnant को दे दीजिए, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है. एंड ना ही इसका कोई एडिक्शन होता है. लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को आदत तो नहीं पड़ जाएगी, जैसे नींद की दवाइयां खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बिना वो नींद ही नहीं आएगी. बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द इमोशंस और द बेसिक रूट कॉजेज ऑफ योर प्रॉब्लम्स. Right. And even the psychosomatic issues, I mean, of late we've heard a lot of depression cases and anxiety cases kicking in, and I've seen in my clients,
that they have actually gotten rid of anti-anxiety pills. उन्होंने completely छोड़ दिया, which is a very big thing. You know, we never also the beautiful part of batch is कि आप इसको किसी भी modality के साथ use कर सकते हो. बिल्कुल. राइट, आप एलोपैथी, आप कोई भी मॉडलिटी यूज कर रहे हो. सो बैच कभी बोलता नहीं है कि आप सिर्फ बैच पे रहो या किसी और पे रहो. इट इज जस्ट एज गुड एज वाटर. जो आप पानी पी रहे हो वैसे अगर आपने चाय पी रहे हो साथ में, so you can just keep taking that along with whatever modality you're following, and you just come out of it like this. So anxiety cases, depression cases, you know, it actually enhances the efficiency of that specific treatment which you are going at, which you are taking actually. yes, yes. So मुझे लगता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए बहुत से लोग बोलते हैं उनको साइटिका है या कुछ टेनिस एल्बो हो गया या शोल्डर पेन हो गया, एंड यू नो सो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा जो इससे मतलब यू नो इट इज ऑल कनेक्टेड. एंड अगर आपका फिजियोथेरेपी भी चल रहा है ना, उसके संग में भी आप इसको ले लो, आप देखो कि आपके रिजल्ट्स मतलब आप मुझे लगता है कि शायद दुगनी स्पीड से आप रिकवरी करते हैं. Right. Meaning, are you talking about like the physical issues? Yes. Along yes. with the psychosomatic. Yes. So what do you feel, Apoorva? My next question is this only. कि what do you feel? Like how bachelor therapy can help? If पहली बात तो ये कि क्या bachelor therapy हमारे physical issues में हमको help कर सकती है? And if yes, then how? Yeah. So see, batch is such a unique system. You know, we know that हर एक जो आप हो ना, आपके लिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है. सो आपको अगर कोई फिजिकल इशू है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव फीवर एंड यू हैव फीवर, शेफाली जी, हमारे रीजंस कंप्लीटली अलग हो सकते हैं बैच की थ्योरी के हिसाब से, राइट? यू माइट बी हैविंग अ फीवर बिकॉज ऑफ फियर, आई माइट बी हैविंग फीवर बिकॉज ऑफ एंगर, राइट? सो दैट इज वेरी द ब्यूटी ऑफ बैच. आप जो इमोशन वो इशू कॉज कर रहा है, आप उस इमोशन को हील कर दो, वो इशू अपने आप चला जाएगा. Like you can see in the cases of like migraine, you know, the spondylitis, sciatica, BP, hypertension. At the age of 30, you might find a lot of people are struggling with the high BP or the low BP issues, right? Now the age is no bar कि अभी इतना age, पहले होता था कि नहीं ये 40 के पार हो गया तो अभी चेक कर सकते हैं, बट अभी तो मैंने देखा है 25-26 में भी लोगों को बीपी इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज आ रहे हैं. As critical as, you know, the cases where even medical science has sometimes refused, we have seen such cases also getting healed. So I've seen a very profound effect in one of the cases, which was of cerebral palsy. So it's like a very different, you know, scenario where on physical, emotional, mental, every level it is working. Yeah, it is actually working miraculously. मैं भी यहाँ पे एक शेयर करना चाहती हूँ. मेरे पास एक क्लाइंट थी एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, और उसके फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि उसको हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 माइग्रेन अटैक्स आ रहे थे. एंड यू अंडरस्टैंड माइग्रेन जब होता है सो यू नो कितना आप पेनफुल कंडीशंस में होते हैं. सो दिस इज अभी जब उसको चेक किया हमने, अगेन माइग्रेन के कोई एक दवाई नहीं है यहाँ पे. इफ आई एम टॉकिंग टू यू अपूर्वा, आपके रीजंस माइग्रेन के लिए कुछ अलग होंगे, मेरे लिए कुछ अलग होंगे, एंड डेफिनेटली वी वर्क ऑन दोज रीजंस. सो व्हेन आई टॉक्ड टू हर, आई फाउंड दैट कॉजेस, एंड जैसे मैंने उसको बैच से ट्रीट किया, सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से चला गया कि एकदम ही हो गया, बट हाँ जहाँ उसको हफ्ते में 3 बार अटैक्स आ रहे थे, वो 2 हफ्ते में एक बार पे शिफ्ट हो गया, एक बार के केवल लेने में ही. एंड उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, उसका जो जितना डेप्थ था, जितना इंटेंसिटी थी उस दर्द की, वो रिड्यूस होती गई. एंड नाउ आफ्टर 6 months to 8 months मैं देखती हूँ तो कभी शायद उसको 4-5 महीने में एक बार उसको कभी माइग्रेन अटैक आता है. सो दिस इज द ग्रोथ, यू नो, यू कैन सी in the people. So this is so wonderful. Similarly, I remember, you know, there was this girl and she was having hives on her hand. Yeah. And she wasn't able to understand, you know, किस चीज का reaction हुआ है. When we started treating her, we got to know that she was continuously, you know, she was on a contract basis. So like she used to go to different organizations to work. तो वो जब नए नए एनवायरनमेंट में जा रही थी, वो नया एनवायरनमेंट वो एडजस्ट नहीं कर पा रही. So, you know, just giving a simple medicine of walnut, which was like, you know, protecting from the external influences or getting it used to it, uski hives were completely healed.
and she was taking medicines, she was taking anti-allergy, and within like I think what I remember is like 5 to 6 days, all that hives thing had calmed down. Yeah. This is very good for skin allergies also, and every skin allergy it works. इससे मुझे ना एक बहुत ही अमेजिंग चीज याद आ रही है पूर्वा, विच आई रियली वांट टू शेयर हियर, कि वॉलनट आपने नाम लिया, इट इज सच अ वंडरफुल रेमेडी. My niece was going to like for to staying for the higher education, बाहर जाना था, and इतना ज्यादा मतलब वो पैनिक हो रही थी. एंड उसके बाद में उसको लगा था, मैं वो नॉर्थ से थी, साउथ में जा रही थी, मेरे खाना पीना, शी वाज वेरी फूडी, उसको लग रहा था मैं कैसे खाना पीना एडजस्ट करूंगी. अब मजे की बात ये है कि क्या किसी भी साइंस में कुछ ऐसी चीज अवेलेबल है जो ये बच्चे को समझा सके कि दैट्स ओके, मतलब यू विल बी Going to this tablet. कि हाँ, कि ये टैबलेट ले लो भाई और तुम्हारा ये वाला चला जाएगा, प्रॉब्लम चला जाएगा, यू विल बी एबल टू एडजस्ट इन एनी एनवायरनमेंट विच एवर यू आर गोइंग टू. बट बिलीव मी, उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने वॉलनट से ट्रीट किया, एंड पता ही नहीं चला. शी वाज टेलिंग मी कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आई एम सो हैप्पी, सो चिल. और उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे थे तुम्हें याद भी नहीं आ रही है हमारी. कह रहे नो नो, आई एम मिसिंग यू, बट आई एम फाइन, आई एम ओके. सो दिस इज missing with the sense of serenity. Yes, missing with the sense of serenity. ऐसा नहीं है, मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि वो सेंस ही चला गया, वो प्यार नहीं रहा, ऐसा नहीं है. बट yes, you can memorize, you can अपने लोगों को याद मुस्कुरा के भी कर सकते हैं, बजाय कि दुखी होने के. Very true. Similarly, like ladies today or women today, they're juggling so many roles. You are, working at home. You may have some demands from your home for your kids, from your kids. Similarly, when you're going in a workplace, आपको workplace में कोई ये advantage नहीं देगा कि, and fairly so, you have to work, and then you have to, make your mark. You can't say that oh, my kid is too demanding, and so I need a project that demands like 10 hours instead of 12 hours, right? But so all those things, and when these emotions actually, because कुछ भी होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, emotional level पे hurt होते हो, या emotional level पे आपको कुछ तो issue आता है, right? And then these issues keep piling up, and we have seen so many ladies in the later stages, who go through fibroids and different kind of issues. ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, fibroids and cyst develop हो जाना, stone issues, and funnily though, when we study batch, जब हम batch पढ़ते तो हमें पता चलता है कि this is so much related to stored anger, or yes, you can whatever you are holding on, it is creating, not letting go. हमें ऐसा लगता है हमने control कर लिया, but somewhere or the other it is creeping up in your body later on. So I think it is a boon, first of all, to understand. हमें पता था क्या कि डर 5 तरीके का हो सकता है. Not at all. डर is like डर for us, right? 5 types का. Uncertainty कितने type की होती है? 7 types or so. So we know like that uncertainty 7 types की. अभी लोगों से पूछिए कि uncertainty is a single word, and for everyone, for normal, मतलब like when we didn't study this, so uncertainty is a single word for us. अच्छा, she's very uncertain. I did not know that uncertainty is an emotion also, to be honest. Yeah, true. It was just like ये मुझे होता है, I just go in that. So it is beautiful, first of all, to discern. आप ये समझ पा रहे हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. इट इज एन इमोशन दैट इज कमिंग. गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सैल नहीं हो, बट एंगर इज एन इमोशन दैट इज कमिंग, राइट? आपको डर लग रहा है तो आप डरपोक नहीं हो, बट आपके अंदर एक डर है, which can be for your family members, or which can be from अंधेरा, मतलब from अंधेरा. आप देखिए ना, ऐसे भी लोग हैं जो इतने ब्रेव होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं. एक छोटी सी मकड़ी से भी डरते हैं, या छोटी सी छिपकली से उनको डर लगता है. सो इट डजंट मीन दैट दे आर डरपोक और काउ. इट इज जस्ट कि वो फियर है, और बट हम मजे की बात है कि हम इस फियर को निकाल सकते हैं. Similarly, I think one of the best cases, best examples,
you know how we girls or women, when we go out in a social setup, and we think, you know, I'm an introvert, uh, right? मुझे शर्म आती so है, many. I'm shy and I'm an introvert, so I can't interact. But you know now that it is a water boiler state, right? Yes, yes. So it's very enriching, very enlightening, बहुत, you know, liberating to understand that, you know, To these understand are like emotions, which emotion you are going through with which emotion. right? So Apurva, what you feel like हम इसको सीख सकते हैं? Of course, I think, first of all, I really think whether or not you want to treat others, आप दूसरों के लिए therapist बनना चाहो चाहे नहीं चाहो, that is up to you. But I would really recommend, you know, हर family में एक इंसान को तो at least level 1 करना चाहिए, so that आप खुद को तो treat कर पाओ, आप दूसरों को मत Exactly. भी करो. But you know, being able, आपका बच्चा रो रहा है for example, and आपको पता है कि अच्छा मैं rescue दे देती हूँ, so it will calm him down, and it's just wonderful. And क्या है वो, it's just flowers, nothing Just else. flowers. And सबसे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें फ्लावर्स से एलर्जी है, क्या हम ले सकते हैं? तो इसमें ना तो कोई फ्रेग्रेंस होती है ना ही कोई टेस्ट होता है. सो Right. तो आप आराम से ले सकते हैं, किसी को कुछ भी परेशानी नहीं होती है इसको लेने से. एंड यू नो जैसे डॉक्टर बैच ने बोला था कि ये बिल्कुल ऐसे ही हर घर में अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि हमें भूख लगी और हमने फ्रिज खोला और उसमें से हमें कुछ भी खाने के लिए मिल गया. सो वैसे ही जैसे हमें कोई इमोशन सडनली आया, मान लीजिए हमें गुस्सा आ रहा है एंड वी आर अनेबल टू कंट्रोल एंड वी नो कि ये मतलब इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कंट्रोल, बट हम सप्रेस करते हैं रादर देन कमिंग फिर आउट ऑफ explode दैट करते स्टेट. और फिर अचानक से एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि भाई अब तो एकदम ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. हैं. सो Yes. ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मुझे लगता है कि बैच इज द बेस्ट वे टू हैव एंड टू लर्न. Right. So here Vior is offering a very structured and very precise course, which is just and that too is providing a very pocket friendly amount and time too, because वही है ना, Just 5 दिन and just 2-2 घंटे. yes. Yeah, just 5 days and 2 hours you have to take out, and उसके बाद में आपको ये बढ़िया सी And it's knowledge. a lifelong lesson, I feel, because Yes, at least you know that, you know, you can treat yourself, your friends, yes, your family, at least if you're not going and treating as professional. and if you're not treating na, uske baad bhi Apoorva, you actually start understanding the people, like why they Right. are reacting in such a way. So it's Correct. not always required to treat yourself. अगर आप समझ भी गए कि Correct. this emotion ये ऐसे react इस वजह से कर रहा है, या मेरे को इस तरीके की feeling क्यों आ रही है इस समय, या which is the emotion I am going through, तो Right. आपके लिए easy हो जाता है उससे बाहर आना जल्दी से. Right. So this I mean, knowledge, we can know that, you know, वो volley हो रहा है इसको. हाँ, and it will be a fun. अभी हमें मजा आने लगता है, अच्छा ये ना he is in a holy state यार, relax, उसको ठीक है, उसको गुस्सा हो लेने दो, कोई बात नहीं. So so this is so wonderful. Shefali ji, like, we've announced some courses this month. Yes, of course. एक कोर्स तो कल से ही शुरू होने वाला है, तो जो कोई भी इसको देख रहा है, आप सब लोग इसको कल ही अवेल कर सकते हैं. 6:30 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले तक आप अपने एनरोलमेंट कर सकते हैं. पूरी डिटेल्स के लिए आप हमें डायरेक्टली मैसेज करें या चैट पर अपने ऑप्शंस छोड़ सकते हैं. आपको उसके लिए रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा. एंड एक कोर्स हमारा एट द एंड ऑफ दिस मंथ होने जा रहा है. आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं. Right, this is from 28th of July, right, Apoorva? Yeah. And one is tomorrow from 13th July to 17th July, just 5 days. मैं इतना जरूर बोलूंगी कि ये 5 days अभी तक जितने मेरे कॉन्टैक्ट में लोग हैं जिन्होंने कोर्स लेवल 1 किया है, उन सब के लिए लाइफ चेंजिंग जर्नी रही है. Definitely. So It's been, and I think this is one of the best things that, as good as, you know, knowing those basic medicines that we keep on our counters, right? yeah, like तो आप हाँ, aspirin like हम aspirin डिस्प्रिन रखते हैं, and body ache है Flexon, your you know that, paracetamol for the fever, Dolo so I think कितना this is फेमस हो गया कोरोना that से.
This is so important to know, because even if you are taking allopathy, whatever, you can just speed it up. You can just help yourself, you know, uh, to be there quickly and easily. Yes. So yeah, I think everybody should learn at So, least level 1. yeah. So I hope you all gain some clarity about what is Bachelor and how it can help us. So I think we should have one session for men also. डेफिनेटली ये ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेगा कि बिकॉज वी आर विमेन तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट विमेन. दिस इज फॉर मेन टू. एंड डेफिनेटली हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो मेन से रिलेटेड समस्याओं के लिए रखेंगे. उनके भी इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और उनके हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी. डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. If there is any question, you may write in the chat box or you may ask. For any queries, we will revert you back. I think we have one question here. Okay. How to deal with the competition at workplace? Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन तो वर्क प्लेस पे है, अच्छा ही है, आपको मोटिवेशन देता है. लेकिन अगर वो आपके अंदर फियर जनरेट कर दे, जेलसी जनरेट कर दे, इनसिक्योरिटीज ले आए, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करने के संग संग में आपको भी पूरी तरह से आप अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं, बिकॉज आप वो नेगेटिव इमोशंस में फंस के रह जाते हैं. जबकि कंपटीशन बहुत हेल्दी होना चाहिए आपकी तरफ से. सामने वाले को आप नहीं कुछ भी कह सकते हो, बट आपकी तरफ से, राइट? सो अपूर्वा, व्हाट यू वांट टू से फॉर दैट? आई थिंक अगर बैच की नॉलेज है, सो आपको कॉम्पिटिटिवनेस से डील करना है. सो आप ये फाइंड आउट करोगे पहले, जैसे आपने बोला कि आपको डर लग रहा है क्या. सो टेक फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर रेलिवेंट मेडिसिन फॉर डर, राइट, फॉर फियर. आपको ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी हो रही है क्या, मतलब आपको घबराहट हो रही है, आपको पता नहीं है कि यार ठीक है कंपटीशन है बट क्यों हो रही है. तो आप अकॉर्डिंगली एस्पिन या you learn that when you come to the course कि इस ये हो रहा है ना, तो identifying that is very necessary कि आपको हो क्या रहा है. करेक्ट. and that you learn in batch course. That you learn. And अपूर्वा, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज आती है. At times we are out of the ideas. मतलब हमें आइडियाज नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा होता यार कैसे काम कर रहे हैं. वी आर जस्ट इन एंजाइटी कि अब मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, सामने वाला इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं कैसे करूं. बट देयर इज अ रेमेडी, यू नो, वाइल्ड ओट. आप वाइल्ड ओट लो एंड आपको इतना कुछ आएगा ना, मतलब यू विल बी अमेज्ड टू हैव आइडियाज, वंडरफुल आइडियाज इन योर माइंड, right? So this is the beauty of Bachelor, like you got the solution for every problem, I think. Almost every problem. There's one other question. She says that my boss is very bossy. I think Apoorva is the correct person to answer this. No, because my boss is very nice. Okay. But you are in the working environment, right? So you can answer well. Okay, so my boss is very bossy. So you are basically, in a state जहाँ पे maybe आप या तो गुस्सा आ रहा है आपको, right? कि आपको इरिटेशन हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नो नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपको काम दिया जा रहा है, it's too much for you, या फिर you're not being given the good environment that you are expecting. तो ये जो bossiness है, इससे डील करने के लिए भी आपको करेज लगता है. Right. Again, like I said, first of all identifying कि आप नो नहीं कर पा रहे हो या आपको सिर्फ इरिटेशन हो रही है उनके वर्ड से या जिससे भी. ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. या फिर आप वर्कलोड नहीं ले पा रहे हैं, या वर्कलोड नहीं है, वेरी ट्रू. या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, दिस इज टू मच. काम इतना बड़ा नहीं होता है, बट एट टाइम्स हमको वो बड़ा दिखता है, ये भी बात है. सो अगेन उस चीज को डिसर्न कर पाना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एंड देन रेलेवेंट मेडिसिन लेना. दिस यू लर्न इन लेवल 1. इन लेवल 1. तो मुझे तो लगता है लेवल 1 इज लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग आल्सो. Once you will join it, you will really enjoy those 5 days journey. So this is so nice. So thank you so much, and we will meet soon. And see you soon in the course also. Yes, for sure. Bye-bye. Bye. Good day to you all.